should live now. So hey guys, my name is Abdul Rashid. Finally यहाँ पर ना आज AMD अपने नए प्रोडक्ट्स को अनाउंस कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो यार लाइव स्ट्रीम किया जाए और ताकि Hello. Thank you all for taking time to join us for this AMA session. I'm Mithun, your host for this particular session, and joining me from AMD is Mr. Srinivas M. Reddy, who's the country head for component channel sales and distribution. Hey Srini, are you there? Would you like to share a few words with our viewers? Hey, hi. Thanks, Mithun. Thanks for the introduction. Hi all, everybody. It's very exciting here to see you all and kind of join you for this AMD is the newly launched Cezanne parts, codenamed Cezanne, the 5000G series processors deep dive session. I would be happy to kind of address your questions, queries through this session as Mithun takes through the product updates with you all. It's very exciting here. As Mithun introduced, I lead the component channel business for India, and happy to be with you all here. Let's look forward for this session. Thank you. Thank you, Srini. Before we begin the session, I'd like to let you all know that we do have plenty of time to answer your questions throughout the session. We'll be pausing the session every few slides to take your questions rather. And for those of you who signed up via Facebook and our website, we already have questions from you. So we'll be answering some of those, and we'll also be answering some from the live chat in the chat box. And for the folks who are coming up with the most interesting questions, we also have Amazon gift vouchers up for grabs. We have 5 of those, each valued at 2,000 rupees, and we'll be announcing the winners on Monday on this very same video. So if you come to the video on Monday, you can check them in the comment section below us. And with that said, we will begin the session. So the Ryzen 5000 processors were first announced in October last year and saw AMD's latest CPU microarchitecture, which is Zen 3, in action. It brought with itself significant single-threaded as well as multi-threaded performance gains. In fact, all the Ryzen 5000 series processors scored Hello everyone. 600 points in the Cinebench R20 single-threaded benchmark. And these were the very first processors ever to break the 600-point barrier. Today's session is all about the AMD Ryzen 5000G series APUs, which include the AMD Ryzen 5 5600G and the Ryzen 7 5700G APUs. APUs are simply processors which also include an integrated graphics processor or IGP. And usually when we folks hear about the term APU, we sort of assume that the processor will be meant for entry-level segment, but that's not really the case here, as the two SKUs that we are talking about today, that is the Ryzen 5 5600G and the Ryzen 7 5700G, are meant for the mid-range and high-end segments. To top that, the integrated graphics, which is powered by AMD Radeon graphics, is way more powerful, and you'll see all of those in the coming slides when we share the benchmarks. Now, this also begs the question, who are these new APUs meant for? To start off, you have the very latest Zen 3 microarchitecture powering these processors. This offers enthusiasts the raw processing power to run the latest AAA video games and even content creation applications. The Zen 3 cores are the exact same ones that you find within the other members of the Ryzen 5000 family. And on top of that, you also have a premium IGP, which offers much higher performance in gaming as well as in content creation applications. And when you usually hear about flagship CPU performance, it's natural for one to assume that these might actually have higher power requirements, and that might necessitate a PSU upgrade. Again, that's not the case either, because these new APUs are typically designed with a TDP of 65 watts. So practically every AM4 motherboard, which already has the appropriate VRM design, can easily handle these new APUs.
If you have a compatible AM4 motherboard that uses the B450 or higher chipset, all you need is a simple BIOS upgrade, and then you can drop these APUs in and get started. मतलब B450 में भी चलेगा. And for folks wondering about the core configuration of the Ryzen 5000G series APUs, we now have all the specifications in front of you. In the mid-range, there's the AMD Ryzen 5 Calculation के बाद कितने की हो which is जाएगा? a 6-core APU with multi-threading, which means that the operating system has 12 threads coming from the processor. The base frequency is 3.9 GHz, and with favorable conditions, that can go up to 4.4 GHz. It has a total cache of 27,000 रुपए की and प्राइसिंग आएगी 5600 the IGP is powered by AMD Radeon Vega graphics that has 7 compute units which can go up to 1.9 GHz. The 5600G has a SEP of 22,990 rupees along with tax added on top of that. And then we have the high-end APU, which is the AMD Ryzen 7 5700G. That has 8 cores, again with multi-threading, so that's a total of 16 threads for the operating system to play around with. And as for the speeds, the 5700G starts off at 3.8 GHz, and its boost frequency can go up to 4.6 GHz. It has 20 megabytes of total cache, and the IGP has 8 compute units which can go up to 2 GHz should the need arise. The 5700G carries an SEP तो of 27,000 रुपए के हिसाब से ना 29,990 rupees ठीक है, with tax not added very on bad. top. सही है, And बढ़िया है. both of these components, like we mentioned previously, are rated for 65 watts TDP. With that, you have a nice overview of the two new processors that we are going to be looking at in today's session, and we'll be now breaking to take a few questions from you guys. तो आज बेसिकली यही दो प्रोसेसर्स को अनाउंस करने वाले हैं ये AMD वाले. Hey Srini, we have a couple of questions from our viewers. The first one is from Kuldeep, who asks, what is so special that makes anyone choose these new processors? Okay, that's a good question, Mithun. Thanks to Kuldeep. 5000G series processors are the latest APUs which we have launched on the same Zen 3 architecture, which we have the 5000X series processors, which we launched last year around October. So you guys don't need to compromise on the CPU performance. We have the same kind of performance on an APU coupled with the latest Radeon cores in it, which gives you the best gaming experience part of it as a package. So it makes really the best CPU you can find with the best graphic cards ever on a CPU. 28 का. हाँ, And मिल जाएगा. Goro Manthan has asked अगर आप अभी a लेने simple जाते हैं ना तो question मिल which we've जाता है already ये. covered. This is, how many cores does it have, and does it support SMT or multi-threading? Oh yeah, so we have launched two new variants into channel market. One is the six-core part, which is 5600G, and the other one is the 8-core part, which is 5700G. Both does support SMT, and you can be assured of these both range of CPUs which can meet your needs. The third question is from Vaibhav Vishal, who's asking, is it good for each and every day-to-day tasks? Okay, so you guys have seen the experience. Most of you have experienced the गिवअवे भी होगा 5000X यार. series अभी थोड़ी processors. देर में हम लोग Our गिवअवे भी day-to-day करेंगे. activities are like Amazon का the most gift card हम easiest लोग यहाँ पे गिवअवे करने वाले हैं. workloads for those processors. So with the जिन same लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया यार, architecture लाइक here कर दो on यार the कम से कम APUs, स्ट्रीम. this is on platform, you can be rest assured that your daily activities, day-to-day activities can be dealt easily. At the same time, you can have the best of the games played on it, be it AAA or most of the esports gaming games on this both processors. And the last question is from Divakar Mazumdar, who asks, can we upgrade to a graphics card in the future if we use these processors? That's the beauty of our architecture today. We give that kind of compatibility and upscaling opportunities for most of you who are investing on us. So yes, definitely you can pair it with the future ready graphic cards if you really need better frame rates and dedicated to AAA kind of gaming. Yes, you can choose our latest 6000 series graphic cards, which definitely suits
you, and it can work easily without any hassle. Thank you for answering all those queries. Now we'll go on with the session. So तो भाई you ये है heard Srini benchmark. mention about some of the benchmarks or the performance aspects, and right now we have with you, or rather, right now we have in front of us are those exact benchmarks. So we are looking at the generational performance uplift between the 3000G series APU and the new 5000G series APU. We see a performance improvement to the tune of 2.78 times of what the Ryzen 5 3400G was capable of, and this is in Cinebench तो यार R20, परफॉर्मेंस डिफरेंस ना काफी because ज्यादा these है new APUs now have a lot more कंपैरिजन टू cores. The 3400G के मुकाबले. 5700G in particular is an 8-core CPU, so that naturally helps in multi-threading benchmarks. But even if you look at the single-threaded benchmarks such as Cinebench R20 or a more balanced benchmark such as PC Mark 10, you बढ़िया हूँ still भाई, see आप an लोग कैसे improvement हो? of 1.45x and यार जिन लोगों ने अभी तक 1.44x स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, respectively. लाइक कर दो यार कम से And कम, as फिर हम for लोग the सारे जो है integrated क्वेश्चन एंड आंसर graphics, भी लेंगे. that is integrated AMD Radeon graphics, 3D Mark Time Spy scores see an uplift of 1.13x or 13%. Now, these are all industry standard benchmarks. Let's take a look at some of the gaming benchmarks. Again, we have a couple of popular esports titles such as League of Legends and CSGO, along with a couple of AAA titles such as Metro Exodus, Fortnite, and Civilization 6, to name a few. We can see that the new Ryzen 5000G series APUs give up to 2x the frame rate as seen in League of Legends. बढ़िया हूँ भाई, And आप in लोग games कैसे such हो? as Fortnite, we can see a frame rate increase of 20 FPS, which is quite a significant bump when you're looking at an IGP. Now, that was generational uplift between the 5000 series and the 3000 series. Let's take a look at one of the processors in a little more detail. We'll start off with the Ryzen 7 5700G. Like we mentioned previously, this is an 5700G के 8-core बारे में CPU बात कर with रहे हैं ये लोग. multi-threading, and the boost clock can go up इसमें to 2 कोर 4 थ्रेड 4.6 ज्यादा हैं. GHz. Being a high-end processor, the 5700G is not only useful for gaming, but also for content creation applications. And we previously saw a small collection of benchmarks in the generational uplift graph. Now we're going to be seeing the comparison of the new 5700G against some of the competition processors. Now this is in the exact same price class, so you know it's a fair comparison. The 5700G is being compared to a competing processor, and we can see the performance delta ranging भाई from competing 19 processor FPS in के some बारे में games तो नहीं to बताया. 50 कौन है? FPS in other titles. Warframe, which is a popular online co-op game, clocks in at 90 FPS, and CSGO, which is again a popular FPS title, hits 127 frames per second. Pairing this processor with a variable refresh rate monitor could significantly improve your gaming experience, as you're seeing 100 plus frame rates in quite a lot of games. And while you saw gaming benchmarks, we now have more benchmarks pertaining to content भाई creation कंटेंट क्रिएशन के applications. मामले में ये And थोड़ा you सा can see हेल्प they've कर been सकता है. bucketed into three Third- separate buckets, where there's a performance increment of 23% when compared to competing processors. And if you're looking at productivity applications, then there's a performance delta चश्मा उतार of दो. 16%. And in general, there's a performance भाई improvement चश्मा of उतार about दूंगा तो तुम्हारा कमेंट कैसे 31%. पढ़ूंगा? And that was the benchmarks for the Ryzen 7 5700G. We can now pause again to take a few more questions. Srini, if you're there, I have a couple of more questions from our viewers. So Shubham Gupta is first. He's asking, how long will it support Windows operating system updates? Thank you Human Kid for Yeah, 40 that's rupees a super good chat. question. Not just we are talking about compatibility for future parts, but not just that. We're talking also about the software compatibility. So we are not just Windows 10 ready, but also Windows 11 ready as we speak. And you can easily port onto Windows 11 when it is launched. Next up is Bimalendu Das, who asks, is it a 7 nanometer processor? Yes, of course. So both are 56G and 57G. Both are based on the latest 7 nanometer FinFET technology. And yes, I confirm that.
Okay, and the next question is by Harsh Mevada, who asks ओके if कैमरा he ऊपर can ले लो, overclock बेंचमार्क this देखने में particular दिक्कत processor. होती है. ओके Yeah, as you guys have experienced, almost all our Ryzen CPUs are factory unlocked. So you guys can see the same feature being available on our 5000G series processors as well. Yes, both the CPUs are unlocked and you can overclock as well. Up to your taste buds, you can do that. And this last comment or other question is from the chat box. This one asks, is FSR supported on the 5000G series? Yeah, FSR Fidelity FX Super Resolution is one of such great features we have today in our CPUs. I'll be happy to say that even this feature is enabled on our 5000G series CPUs. You just need to enable as and when you play those games. तो And मतलब yes, you got to be updated with your latest FSR का drivers, which will take care of it. So FSR का फायदा FSR उठाने के लिए is आपको ग्राफिक्स enabled on कार्ड की both भी these. जरूरत नहीं पड़ेगी. आप जो है ना All right. With प्रोसेसर के that, iGPU से ही we इनेबल कर stop our सकते हो. second Q&A session and head बेहतरीन back चीज to है the यार फिर तो ये. Thank you, Srini. Now we are looking at the Ryzen 5 5600G. It's the mid-range 6-core APU. Again, this thing comes with multi-threading and the boost clocks can go up to 4.4 GHz. The mid-range is the most popular segment for processors and the introduction of the 5600G does certainly liven things up. Here are a few more benchmarks to show how it performs when compared to the competition. Now you've got a gaming benchmark sheet in front of you. You've got Sid Meier's Civilization 6 scoring 79 frames per second. Then there's Assassin's Creed Odyssey hitting 33 frames per second. And Metro Exodus, which is quite an intensive title, that scores 44 FPS. And if you're looking at popular esports titles, then you also have CSGO and League of Legends in this chart, where you can see you're getting more than 100 FPS. Fortnite even goes all the way up to 184 FPS. CPU साइड इसका जो परफॉर्मेंस होगा ना वो ऑलमोस्ट 5600X से थोड़ा सा कम या उसके आसपास ही होगा. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. Most of the titles shown here. Now, like we saw with the 5700G, the new 5600G is also great at content creation applications. On average, there's a performance improvement of 27% in content creation applications. That's a little more delta compared to what we saw the 5700G. And if you're looking at productivity applications, then there's a performance delta of 16%. And in general, there's a performance improvement of about 30%. Again, this is all when compared with the competition. Now, those were just some of the titles that we saw in the benchmark sheet. And the new Ryzen 5000G series APUs have been shown to score over 100 FPS in a lot more demanding titles मतलब such Witcher as 3 में Shadow of the 100 plus Tomb Raider, FPS Far मिल Cry रहे हैं. 5, The Witcher 3 कैसे? and a lot more. You have a nice list right in front of you. भाई ये तो And चेक if you करना pay पड़ेगा attention पक्का. to some of the recent announcements made by AMD and also like Srini mentioned recently while answering one of the questions, you would have अरे heard गिव अवे में about अभी हम लोग Fidelity पार्टिसिपेट FX Super करने के लिए आपको Resolution, थोड़ा सा भी a रुकना new पड़ेगा. feature Q&A that होगा helps gamers वहाँ पे जो hit a बंदा lot more frames per उसका भी हम second रूल्स बताएंगे in अभी थोड़ी video देर में. games. Now, several titles have already तो incorporated AMD's FSR Fidelity के बारे FX में भी यहाँ पर बात Super हो रही है. Resolution or FSR, and this includes titles such as Resident Evil Village, Godfall, The Riftbreaker, Anno 1800, Dota 2, and King's Hunt. There are a lot more titles in front of you, and these were just the games that currently support FSR. There are a lot more studios working on a lot more video games which will support FSR at some point in the future. It might be at launch or it might be in a patch later on. This includes Baldur's Gate, Far Cry 6, Farming Simulator 22, Forspoken, and Vampire Blood Hunt. Now we've seen quite a lot of performance benchmarks along with the introduction of AMD's FSR tech. So we can take another break now and handle a couple of more questions. Hey Srini. Hey Mithun. Yeah, we've got Ravi Kumar who's asking what are the MSRP and the available distribution channels. He also has a comment which says the resellers are stocking up and selling
at a premium in e-commerce space? Okay, I think it's a very valid question. Thanks, Ravi. I would love to address your query in detail. If you look at the MSRPs, we have something called ACP, suggested end customer price. These prices are in line to our global price points. We operate the same price points even in India. You can look these prices at any of your neighborhood store across India. The prices still remains in line to our global announced SAPs. What does it make difference on an e-commerce platform is something you guys need to know. E-commerce platforms in India are marketplace wherein the platforms charge their commission for whoever is selling on their platform. So from suggested SCP to the price what you see on any retail portals, you definitely will see slightly higher than the SCP or in line to SAP, but the difference is just because the platforms have their own cost to the sellers. I hope I addressed your query. And we are going to be taking one 1650 question सुपर from the वाला chat जो box. गिव है उसका रिजल्ट भी आज या कल में मैं This निकाल asks, दूंगा. can it run games at 1080p settings? Oh yes, if you look at these processors are well built for that 1080p settings. Any games for that matter with 1080p settings, you can easily play. While you guys have gone through the slides which Mithun was taking through, you have seen the FSR feature is one such feature which can help you guys really boost the performance. And once just that you enable those, you definitely will see 1080p games running very easily for you. The next question is by Mohan, who asks, what is the difference between this and the last series? Okay, so it's still valid follow-through question. Definitely, there will be always expectation when you have a successor coming, and you can watch on these CPUs. You will see these CPUs are built on the 7 nanometer FinFET, latest on the latest Zen 3 architecture. You will definitely see the performance boost in the graphics because we have the world-class graphics ever in a CPU integrated on a CPU. So rest assured, this is the best APU you would have ever seen in the market. Next question is by Mausam Kumar Dave. I'm going to rephrase this a little bit. He asks, how much is the 5000 series good at while playing AAA titles for the new gen era? Basically, he's asking how good is the 5000G series for upcoming AAA games? They are, as you guys have seen, most of the titles you would have seen through the slides. We have much of the AAA titles which is already compatible with FSR feature in place. Any future, we are already working with a lot of AAA titles. Any future AAA titles with FSR feature enabled, you definitely can feel the difference and run those games at the frame rates you expect to run without any stutter-free kind of an experience. Thank you, Srini. I guess it's time for us to head back into the slides for one last session. Sure. So, because you have AMD's Radeon graphics powering the driver IGP support within सब कुछ these enable new कर दिया APUs, जाएगा. you also get the benefit of the Radeon software that has been built over generations of development. Now you get first-class driver features for gaming. This includes AMD's FSR, as we've just talked about, and that also includes Radeon Boost, which is again another technology that helps you get a slightly better experience. Then there's Radeon Anti-Lag, image sharpening, Radeon Chill, and a lot more features, as you can see in the slide in front of you. All of these contribute to a much better gaming experience for the end user. And the first one, that is AMD Fidelity FX Super Resolution, is something we'll be going to a little more detail. तो यहाँ पे अब FSR के बारे में बात हो रही है. Improvement of about 2.4x in certain titles. Now FSR has 4 different profiles. You have balanced, you have performance, you have ultra, and you can vary the performance across all of these different profiles depending upon what you have running.
Now, if a particular game gives you, let's say, less than 100 FPS in ultra quality, you can switch it down to performance or balance and then अभी get तो यार more FSR की बात frames. हो रही है. Now, higher frame rates also means lower latency and more responsive gaming. Plus, you also get the advantage of pairing high refresh rate monitors with variable refresh rate with these processors to get a more fluid experience. Now, IGP that is present in the processor again is powered by AMD Radeon, and whatever tech you have in your graphics cards that is part of the AMD GPU Open platform is also available on these APUs as well as the notebooks. Now, you've seen how FSR actually improves performance as well as gaming experience. Let's take a look I have a at cat some named benchmark Simba. figures to see how big of an Cool. improvement you can experience. ओ Now, in भाई front of you, you have AMD Ryzen 7 FSR से तगड़ा 5700G परफॉर्मेंस with बूस्ट मिल रहा FSR है. turned on, and all of these titles that you see in front of you were benchmarked at 1080p resolution at varying graphics settings. The white bars represent AMD's Ryzen 7 5700G with FSR turned off, and the orange bars represent the same processor with FSR turned on. You can see how Anno 1800 nearly doubles its performance, and you can see तो मतलब a FSR से similar आपका performance परफॉर्मेंस improvement in ऑलमोस्ट the डबल हो Kingsund जाता है. low profile. Same thing again in Riftbreaker Ultra, and the story continues across the entire graph. The delta is around 20 FPS or more across all these titles. So there's a significant performance bump that you're getting just by turning on a software feature, which is again free. Now, if you are aiming at the 5700G or the 5600G, there's an added benefit. You can get these processors now because let's say if you're holding out on buying a new PC simply because graphics cards are supremely expensive, then this is a nice way of getting a system together because you don't have to bother about a graphics card at the moment of purchase. In fact, you can go and get ये तो AMD है. RX 6000 series later on and add it to your system, and it will work just fine. APU का तो Now, खैर in ये order to बेनिफिट build होता a है. system for the Ryzen 5000G series processors, all you need are AMD AM4 socketed motherboards built using the AMD 400 and 500 series B450 chipsets. सपोर्ट कर This रहा है includes भाई. the B450, ये तो X470, अनएक्सपेक्टेड था. A520, B550, and X570. All you need is to check the motherboard support page to see if they have a BIOS upgrade with Giza 1.2.0.3b or newer. Take that BIOS, flash it onto your motherboard, swap the processors, and you're good to go. And now we are ending, or rather nearing the end of our presentation. We've seen how these new processors include AMD's latest Zen 3 microarchitecture, and it's paired with their Radeon graphics. Again, यार premium B550 IGP B450 coupled सपोर्ट with कर रहा है ना, मेरा Helium सुन के दिल खुश हो गया. microarchitecture to give you really good gaming performance as well as content creation performance. And because these new processors are now in the mid-range as well as in the high-end segments, you have an APU in every single segment that you want. So if you're looking at the entry level, you have the previous 3000 series G processors. In the mid-range, you have the 5600G, and in the high-end segment, you have the 5700G. And because it's AMD's own tech powering the IGP, you also have the benefit of AMD's Radeon software to go with the IGP. And with that, we are going to conclude the slides, but we still have time for one more session of Q&A. So if Srini, you're there, I will switch to our last set of questions. Yes, Mithun. The first one is from Rahul Malvia, who asks, is it good for content creation applications such as Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, and Cinema 4D? Yes, so these processes are really good when it comes to content creation as well. As you have gone through the slides, certain benchmarks we showed up to 20% against a competition. We show uplift when it comes to content creation applications, be it Adobe Photoshop kind of applications or any other related ones. So
we do see upliftment compared to competition as well. And the next question is something we've already answered, but we can obviously take it again. Arpit Goyal asks, what are the compatible motherboards? Yeah, perfect. I think that's very important, you guys, to know the compatibility of motherboard chipsets. One thing we have made sure is that we give that compatibility on the existing set of chipsets, starting from the 400 series as well as to the 500 series. So you can pair it with a B450 with updated BIOS and go Which up to new APUs are X570. launched? We are compatible across the 5600G range and of the 5700G chipsets. अभी भी launch हुआ है. And the last question from our previously registered bank is by Apritam Kumar Singh, who asks, how well does the 5000G series desktop processors tackle heat while maintaining high performance? ये भी Yeah, I question सही think है. that's one of a legacy question. If you guys ask about AMD platform, the heat is one of the doubt anybody would have, maybe even today. But you guys see these 5000G series CPUs are based on the latest 7 nanometer architecture, which consumes a maximum TDP of 65 watt. And while you can have your all the workloads at ease of this power consumption, maximum up to 65 watt. So rest assured, these are the best power efficient CPUs you could get in the market. And then there's one question from the comment section. This is by Sai Karthik Prashant, who's again asking a question along the same lines. Does it come with a stock cooler, or should we go for an AIO cooler? Which one is good? Yeah, so both the CPUs come with stock red steel coolers. So these are really good for your day-to-day activities, be it casual gaming as well as your day in, day out activities. These coolers are really good enough. You can be settled with these coolers, but someone is really an enthusiast who want to upgrade a higher end graphic card and push the load up to 8 cores completely. अब यार A320 Then तो maybe support नहीं करेगा. recommended custom cooler from any of या our हो partners सकता हो in the मैन्युफैक्चरर market is अगर still BIOS recommended. अपडेट दे दे तो हो सकता है. All right, with that, we have finished up all the questions. There are a lot more coming in the chat. I don't believe we have time to answer those at the moment, but we'd like to thank each and every one of you for taking the time out and joining us for this session on the AMD Ryzen 5000G series APUs. And a special shout out to our guest, Srinivas M. Reddy, Country Manager of AMD, for channel sales and distribution. Thank you again, Srini. It was a wonderful time hosting you for this session. Thanks, Mithun, and thanks one and all who joined this session. It was really good, great questions. I hope you guys are satisfied. If not, we have our team spread across the regions. You can reach out to us. We are there to address your queries. Thanks for joining. Thank you once again. Thanks, Mithun. Thank you all. Bye. लगता है यहाँ पे अब ना ये खत्म हो गया है और शायद खत्म ही हो गया है, तो इसको हम लोग पॉज कर देते हैं और बंद ही कर देते हैं इसको यहाँ पे हम. तो यहाँ पे ना अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत गिव अवे के बारे में. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया गिव अवे का क्या सीन है, तो गिव अवे के बारे में ही अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक से. तो यार गिव अवे का यहाँ पर रूल्स ना बिल्कुल सिंपल है कि आपको बस करना ये है 5600G या 5000 सीरीज के जो अभी APUs लॉन्च हुए ना उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है विद योर ईमेल. यानी कि अभी चैट में ना आपको एक क्वेश्चन लिखना है और ईमेल लिखना है. जो सबसे अच्छा क्वेश्चन या लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा एक रैंडम बंदे को मैं सेलेक्ट करूंगा और उसको मिलेगा अमेजोन का गिफ्ट वाउचर. तो यार जल्दी जल्दी अभी कमेंट करो आप लोग, मैं ट्राई करूंगा कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने का. उसके बाद हम लोग अभी विनर्स को चूज नहीं करेंगे, विनर को डायरेक्ट ईमेल पहुंच जाएगा. तो यार अपने अपने क्वेश्चन आप लोग टाइप करिए. देखते हैं यहाँ पर आप लोग क्या क्या क्वेश्चन टाइप करते हैं. भैया चीपेस्ट AIO विद स्क्रीन आंसर प्लीज. देखो यार चीपेस्ट AIO विद स्क्रीन तो भाई चीपेस्ट में तो नहीं आता, बहुत महंगा आता है. आप लोग को बस कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछना है 5000 सीरीज APUs के रिगार्डिंग विद योर ईमेल.
जिस बंदे ने सबसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछा या जो जो जिसको मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लूंगा और उस बंदे को अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। ये है विद योर ईमेल, ईमेल भी लिखना है साथ में अपने क्वेश्चन के। तो स्टार्ट कर दो अब आप लोग भाई। विच ऑफ दीज थ्रोटलिंग व्हेन यूज अप टू सम एक्सटेंट। भाई यार एपीयूज थ्रॉटल, यार ये तो कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करता है आप कितना हैवी यूज करोगे। वैसे सीपीयू थ्रॉटलिंग होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि कूलर जो एएमडी के बॉक्स कूलर होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे होते हैं। 5600 को अगर फ्यूचर में 3660 Ti के साथ लगाया जाए स्टेबल चलेगा? भाई बिल्कुल चलेगा यार, 3660 Ti आराम से इसको सपोर्ट कर लेगा, कोई आपको बॉटलनेक देखने को नहीं मिलेगा। आई वॉन्ट टू आस्क, शुड वी वेट फॉर द इंटेल ग्राफिक्स और डू वी हैव टू गो विद करंट जीपीयू प्राइसेस? भाई वेट कर लो यार, ज़्यादा बेटर रहेगा। 3-4 शायद 5-6 महीने में आएगा, ज़्यादा जल्दी है तो आप ले भी सकते हो। विच यार लो अब आप लोग अपना जो है क्वेश्चन के साथ ईमेल भी लिखो यार, वरना अगर आपका क्वेश्चन सेलेक्ट होता तो मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। एएमडी के साथ कौन सा मदरबोर्ड? भाई डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो। B550 एक अच्छी ब्रांड का मदरबोर्ड मोर देन इनफ रहेगा। विच आर्किटेक्चर इज दिस एपीयू बेस्ड? चलो यार विच आर्किटेक्चर, देखो यार है तो ये बेसिकली Zen 3 आर्किटेक्चर है, 7 नैनोमीटर बेस, जो कि बाकी के जो 5000 सीरीज के प्रोसेसर जिस पर बेस्ड हैं तो उसी पर ये भी बेस्ड है। सर माय क्वेश्चन इज Ryzen 7 कैसे क्या B550 मदरबोर्ड भाई सपोर्ट करेगा यार? एमुलेटर के लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा? 5600G ले लो यार, बढ़िया रहेगा। iGPU के साथ कंपेरेबल है? iGPU किसके साथ कंपेरेबल है? देखो यार iGPU से आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, शायद 1050 डेस्कटॉप वाला था उससे कम आपको परफॉर्मेंस देगा। 5600G के साथ 3090 लगा सकते हैं क्या? भाई इतना जुल्म मत करो यार। 5600G का सिंगल चैनल मेमोरी के पीछे उनके वजन का बेटर है या नहीं? भाई सिंगल चैनल मेमोरी सपोर्ट करता है लेकिन डुअल चैनल में आपको बेनिफिट मिलेगा। 3070 ओवरक्लॉक करने के लिए बेस्ट मदरबोर्ड कौन सा रहेगा? भाई B550 का अच्छा वाला मदरबोर्ड ले लो यार, आप आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा कूलर लगाएंगे। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई, टाइम पे कौन सा बजट सीपीयू लें? भाई यार बजट सीपीयू के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे कूलर्स को कंपेयर भी किया है। क्या एपीयू सीपीयू से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है? भाई ऐसा तो होता नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा कूलर लगाते हो तो कोई भी हीट नहीं करेगा और गंदा कूलर लगाओगे तो दोनों हीट करेंगे। भाई MM17 लूँ या रेजर वाइपर मिनी? भाई पर्सनल चॉइस है, मैं तो भाई MM720 यूज़ करता हूँ, मुझे पसंद है। Do you think these APU can replace the budget graphics cards since there is a way too much price hike in this price segment? देखो भाई बजट सेगमेंट ग्राफिक्स कार्ड ना आज के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो रिप्लेस तो नहीं कर पाएंगे, परमानेंट रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान में रखो, प्राइस भले बड़ी चल रही है लेकिन आज नहीं तो कल लोग हमेशा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ ही जाएंगे। ये एपीयूज आपको टेम्परेरी ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से बचा तो सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और हो भी नहीं सकते। 1060 लो प्राइस में मिल सकता है? भाई डिपेंड करता है, आप ढूंढ लो तो मिल जाएगा लेकिन 14-15 से कम का नहीं मिलेगा। हाउ मेनी ईयर्स टिल अमेजॉन इंडिया गेट जीपीयू स्टॉक एट रियल प्राइसेस? भाई जितना आपने मुझे अमाउंट डोनेट किया है ना उतना साल आपको रुकना पड़ेगा। What will happen if the pin breaks of 5000 series CPU? भाई जो हमेशा होता है, प्रोसेसर नहीं चलेगा या उसका कोई फीचर डिसेबल हो जाएगा। क्या मदरबोर्ड बता दो अंदर 15,000 रुपये, 15,000 रुपये के अंदर गीगाबाइट का B550 प्रो सीरीज पर ना अभी डील चल रही है, जहां पर आप जाके अगर मदरबोर्ड लेते हो TIBG स्टोर से तो 2500 रुपये का आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, तो थोड़ी बहुत अभी डील चल रही है। भाई प्राइस कब कम होंगे? पता नहीं भाई। विच हेडफोन यू आर यूजिंग नाउ? भाई यार मैंने HyperX का कोई हेडफोन लिया हुआ है, मुझे याद नहीं कौन सा है, मुझे गिफ्ट किया था HyperX ने, वही है। सर गेमिंग लैपटॉप अंडर 90 के, गेमिंग लैपटॉप का मुझे अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने उस फील्ड पे ज़्यादा कुछ अभी किया नहीं है तो मुझे पता नहीं है क्या लेटेस्ट चल रहा है। मुझे आपसे पूछना है कि मैंने रिसेंटली 70 का पीसी बिल्ड किया था, B450 टॉमाहॉक Ryzen 5000G, सो फ्यूचर में GPU ले लूँगा। 30K का बजट है, कौन सा GPU कौन सा है? 30K का बजट है तो भाई नॉर्मली जब प्राइस नॉर्मल हो जाए ना तो 3060 थोड़ा पैसा मिला के आप ले लेना, मिल जाना चाहिए आपको 35 तक के का। क्या 5600G के इंटीग्रेटेड कौन सा परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं? भाई ज़्यादा कुछ नहीं, 750 Ti से थोड़ा आगे का। गिव अवे AMD की साइट पे है क्या? नहीं यार, गिव अवे मेरे चैनल पे है।
गेमिंग पीसी, पबजी पीसी के लिए 50,000 रुपए का, भाई यार वो वीडियोस देख लो आप मेरी। 2 NVMe SSD यूज कर सकते हैं क्या B550 मोबो पे? आप कर लेनी चाहिए, वहाँ जेन 4 में लोचा हो सकता है, जेन 3 तो चल जाएगा भाई। 5600G अरे यार बहुत लंबा क्वेश्चन है, छोटा छोटा टाइप करो यार आप लोग। विल APUs, ठीक है क्या है यार। थैंक यू गौरव भाई, 20 रुपये फॉर सुपर चैट। गेमिंग पीसी 50,000 रुपये, भाई 50,000 रुपये के तो यार मैं अभी पीसी बिल्ड वाली वीडियोस देख लूँ। भाई आपकी शादी होगी नहीं यार, ये सब मत पूछो। 3700X का GTX 1660 कैसा रहेगा? भाई बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा अच्छा ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हो तो आपको वो ज़रूर लो। 1660 3700X के हिसाब से थोड़ा कम है। 5300G कब लॉन्च होगा? भाई यार इसका तो लॉन्च के बारे में नहीं मालूम, हो सकता हो टाइम ले, बाद में फिर कभी लॉन्च होगा। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक ठाक काम चलाओ, आपको परफॉर्मेंस दे देगा। टेम्परेरी आपको ग्राफिक्स कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यार आपको लेना पड़ेगा। मेरे लैपी की बैटरी कितनी बची है? 30% बची है, तो मैं मुश्किल से 5-10 मिनट और लाइव रहूंगा, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर अच्छा कूलर, सर आई एम बिल्डिंग भाई ऑस्ट्रेलिया से GPU लिया, इंटरनेशनल वारंटी यहाँ मिलेगा क्या? नहीं भाई, अगर आपने EVGA के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई इंटरनेशनल वारंटी भी ऑफर करता है, तो इतना लंबा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सब मत करो यार, इंपोर्ट मत किया करो ग्राफिक्स कार्ड। 1058 सफिशिएंट फॉर AutoCAD 3D, भाई यार AutoCAD 3D पर्सनली मैंने नहीं चलाया, जो लोग चलाते हैं वही बता सकते हैं, वैसे चल जाना चाहिए। Will APU have same performance as other 5000 सीरीज? यस। देखो यार 5600G और 5600X को अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हो ना, तो आपको कोई बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डिफरेंस है, बट दैट इज कंप्लीटली फाइन। साइड बाय साइड आप जब तक कंपेयर नहीं करोगे तो आप ज्यादा कुछ नोटिस नहीं करोगे, अच्छा परफॉर्मेंस उनका भी है। लोग भर गए हैं इतने सारे, आपके मजे हैं, हमें गिफ्ट कार्ड मिलने का चांस। यार आप लोग ईमेल अपना टाइप नहीं कर रहे हो यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, लोग ईमेल टाइप नहीं कर रहे हैं, उनका मिस हो जा रहा है। तो यार जो भी टाइप करो अपना ईमेल कॉपी करके रखो, पेस्ट करते जाओ यार कमेंट सेक्शन में। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, कैन आई पार्टिसिपेट? ऑफ कोर्स ब्रो, अमेजोन, लेकिन शर्त है आपके में amazon.in चलना चाहिए। अगर amazon.in का वाउचर आपके अकाउंट में नहीं चलेगा तो भाई आपके लिए बेकार है वो। क्या फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड के अंदर प्रोसेसर आ सकते हैं? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई। Rather वेगा 7 AMD इक्विवेलेंट, वेगा 7 AMD के इक्विवेलेंट क्या है भाई? 5500 RX, 55 RX 550 है, उतने के आसपास परफॉर्मेंस देगा। प्राइस विल बी बेटर एट दिवाली, भाई आई डोंट नो। क्या फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड के अंदर प्रोसेसर आ सकते हैं? कैसे कैसे बातें पूछ रहे हो यार आप लोग। हाउ गुड आई GPU परफॉर्मेंस? 5750G इज इक्विवेलेंट टू द GPU, विल यूज 5750G और सेम आई GPU और बेटर। भाई देखो 4750G को तो मैंने चलाया नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है ना, उसका परफॉर्मेंस 3400G से थोड़ा ऊपर ही है। इस चीज़ पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, सॉरी ब्रो। सर मेरा क्वेश्चन ये है, इतना राइट नहीं है पर मुझे गेम डेवलपर बनना है, मुझे इतना पैसा नहीं है, मैं न्यू PC ले लूँ तो मुझे दे दो सर प्लीज़। क्या यार। हाउ MSI मैक B550 मतलब मोटर वाईफाई बेहतरीन है यार, मैक सीरीज MSI की बेहतरीन है। विच वन Ryzen 5 3400G 4350G? भाई यार 4350G मैंने नहीं चलाया टू बी ऑनेस्ट। क्या फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड के अंदर प्रोसेसर? अरे यार कितनी बार पूछोगे भाई। हाउ मेनी नैनोमीटर्स डज दिस हैव APU? देखो यार 7 नैनोमीटर फिनफिट प्रोसेस पे ये सारे APUs बेस्ड हैं। गेमिंग चेयर का अच्छा एर्गोनॉमिक चेयर, गेमिंग चेयर अच्छा या एर्गोनॉमिक? देखो यार पर्सनली मुझे गेमिंग चेयर ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड थैंक यू फॉर 40 रुपीज़ सुपर चैट। तो मुझे गेमिंग चेयर ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं एर्गोनॉमिक चेयर बेटर होती है, लेकिन पर्सनली मैंने देखा है बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं, तो उनका कुछ फिक्स नहीं रहता, डिपेंड करता है आप लेते कौन सी हो। हाँ उसके बाद कौन सा बचा भाई? ब्रो हाई लेवल कोडिंग के लिए 35K के अंडर हो सकता है? नो आइडिया ब्रो। 35 के अंदर के लिए आपको APU बेस करना पड़ेगा, 3200G बेस PC तो वो बन सकता है।
ब्रो हाउ टू इंटर अ गिव अवे। हाँ ब्रो 3500 जी BFD ओसी कर सकता हूँ। यस ब्रो आप बिल्कुल कर सकते हो। राइजन 5 3600 जी के 2060 सही है, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा यार। Should I do install? What should I do installing a new CPU and tell me pros and cons of this CPU? देखो यार कौन तो कुछ नहीं कह सकते, कौन बस यही है कि अगर आप एक डेडिकेटेड CPU लेते हो ना तो वो थोड़ी सी बेटर वैल्यू ऑफर कर सकता है, लेकिन APU के अपने अलग बेनिफिट होते हैं। जैसे कि उसमें ग्राफिक्स ना प्री इंक्लूडेड होता है, तो आप APU और CPU को कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों के अपने अलग बेनिफिट हैं, दोनों में अपने आपको अलग अलग फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। थैंक यू रॉक म्यूजिक 20 रुपीज़ सुपर चैट। और राजन 5 3600 के साथ विच वन अरे यार सॉरी मिस हो गया मेरे से। भाई अमेजोन रिन्यूड पर वीडियो बनाओ, मैंने CBA के लिया है भाई। मत लिया करो यार रिन्यूड प्रोडक्ट्स, भरोसा नहीं रहता। चलो भाई काम करते हैं यार, देखो यार भाई इन फ्यूचर कैन CPU यार इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ रहे हैं, मिस हो जा रहा है मेरे से। हाउ इज दिस पीसी 3600 1 TB 30 यार परफेक्ट यार, बढ़िया है। इज ऑरस B460 अंडर 15 के, बढ़िया रहेगा, ऑरस का ले लो। विलेज भाई 2 महीने में क्या हो सकता है पता नहीं यार, प्राइसेस अभी डाउन आ रहे थे फिर से अप होने लगे, क्या सीन चल रहा है मालूम नहीं यार। मार्केट क्या कहाँ जा रही है, क्या होगा यार इसके, अब तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है GPU मार्केट कहाँ जाएगी। तो भाई काम करते हैं यार, बहुत क्वेश्चन आंसर हो गया, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी बिल्कुल नहीं बची है। भाई काम करते हैं, आप लोग का क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे ईमेल के साथ वो मेरे पास आ चुका है। अब एक काम करते हैं, पे वीडियो एंड करते हैं। रुको एक मिनट भाई, एनालिटिक्स ठीक है, तो अभी यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन लोगों के लिए, तो उन लोगों को थैंक यू, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, व्यूज़ देने के लिए, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए, और भी बहुत कुछ। तो एक काम करते हैं, इस स्ट्रीम को यहीं पे एंड करते हैं। तो तब तक के लिए स्टॉप स्ट्रीमिंग, टाटा।